विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। इन सब में से किसको हीट करेंगे जिससे ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा। पहला ऑप्शन है K2Cr2O7, दूसरा NH4 का होल टॉइस Cr2O7, तीसरा KClO3 और चौथा ZnClO3 का होल टॉइस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि अगर हम लोग NH4 का होल टॉइस Cr2O7 को हीट करेंगे तो Cr2O3 बनेगा और प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which of the following is not applicable to nylon 6,6? Option A is synthetic fiber, B is fiber, C is adhesion polymer, and D is condensation polymer. The correct answer is D, that is condensation polymer. Which of the following ion has smallest radius? इस सब में से पूछा गया है सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस किसका होगा, कौन से आयन का। ये सारे आयन्स दिए गए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। पहला है Mn2+, दूसरा Ni2+, तीसरा Ti2+, और चौथा है V2+। जो सबसे लास्ट में अगर हम लोग पीरियड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो साइज क्या होती है, आयनिक रेडियस की साइज डिक्रीज करती है। तो सबसे लास्ट में कौन सा पड़ेगा, Ni2+। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, ऑप्शन ए इज क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, बी इज मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल अल्कोहल, सी इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, डी इज फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। In the reaction K2MnO4 is converted into KMnO4, the change in oxidation number of Mn is, first option A is 0, B is +1, C is -1 and D is +7. In this case K2MnO4 has +6 oxidation state and KMnO4 has +7. Change in oxidation is +1. The correct answer is B. Monomer unit of PVC is, PVC means polyvinyl chloride. Option A is vinyl chloride, B is ethylene, C is chloropylene and D is acrylonitrile. The correct answer is A, that is vinyl chloride. Which of the following is not a synthetic rubber? Option A is neoprene, B is SBr, C is thiokol and D is Orlon. The correct answer is B, that is SBr. Following is not a biopolymer. Option A is cellulose, B is protein, C is DNA and D is nylon 6,6. The correct answer is D, that is nylon 6,6. The number of unpaired electron in Ni2+ is, option are 0, 2, 4 and 8. The correct answer is 2. The maximum oxidation state of osmium is, option A is 6, B is 7, C is 5 and D is 8. The correct answer is D, that is 8. Orlon is a polymer of, option A is styrene, B is vinyl chloride, C is acrylonitrile and D is butadiene and adipic acid. The correct answer is C, that is acrylonitrile. Neoprene is a polymer of, option A is chloroprene, B is isoprene, C is styrene and D is none of these. The correct answer is A, that is chloroprene. Polystyrene is a, first option is adhesion polymer, B is thermoplastic polymer, C is both A and B and D is none of these. The correct answer is B, that is thermoplastic polymer. Which is a condensation polymer? Option A is PVC, B is nylon, C is bakelite and D is none of these. The correct answer is C, that is bakelite is a condensation polymer. An sp3 hybrid orbital contain, option A is 1/4 s character, option B is 1/3 s character, option C is 1/2 s character, option D is 2/3 s character. The correct answer is A, that is 1/4 s character. Which of the following polymer is formed by condensation polymer? Option A is Teflon, B is rubber, C is styrene and D is nylon 6,6. The correct answer is D, that is nylon 6,6. Which of the following fertilizer has highest nitrogen percentage? Option A is ammonium sulfate, B is calcium cyanamide, C is urea and D is ammonium nitrate. The correct answer is C, that is urea. Caprolactam polymerized to give, option A is nylon 6, B is Buna S, C is Glyptal and D is Teflon. The correct answer is A, that is nylon 6. Which of the following is a copolymer formed by condensation polymerization? Option A is Terylene, B is Buna S and C is Buna N and D is neoprene. According to this, here asked question that copolymer formed by the condensation polymerization. According to this, condensation polymerization are formed by Terylene. Which of the following lanthanoid ion is diamagnetic? Option A is Eu2+, B is Yb2+, C is Ce2+, and D is Sm2+. The correct answer is B, that is Yb2+. Which of the following polymer is naturally occurring polymer? Option A is polythene, option B is starch, C is nylon, and D is Teflon. The correct answer is B, that is starch.
Which of the following is not a semi-synthetic polymer? Option A is cis polyisoprene. Option B is cellulose nitrate. Option C is cellulose acetate. Option D is vulcanized rubber. The correct answer is A, that is cis polyisoprene. Which of the following crystal has unit cells such that A is not equals to B is not equals to C, and alpha is not equals to beta, beta is not equals to gamma, and gamma is not equals to 90 degree. Option A is monoclinic, B is hexagonal, C is cubic, and D is triclinic. The correct answer is D, that is triclinic. The compound which form only acetaldehyde upon ozonolysis to give. अगर हम लोग इस कंपाउंड इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस करेंगे, तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा. पहला ऑप्शन है इथीन, दूसरा है प्रोपाइन, तीसरा है ब्यूटीन और चौथा है ब्यूट-2-इन. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, दैट इज ब्यूट-2-इन. ब्यूट-2-इन को रिएक्ट कराएंगे O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, H2O, क्या फॉर्म होगा, 2 मोल ऑफ CH3CHO, और ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड. करेक्ट आंसर क्या होगा, डी. Number of atom per unit cell in BCC means body centered cubic unit cell. Option A is 9, B is 4, C is 2, and D is 1. The correct answer is C, that is 2. Which of the following ion is most stable in aqueous solution? Option A is Mn3+, B is Cr3+, C is V3+, and D is Ti3+. The correct answer is B, that is Cr3+. The species which can serve as an inhibitor for the cationic polymerization. Option A is HNO3, B is AlCl3, C is BuLi, and D is LiAlH4. The correct answer is B, that is AlCl3. The hybridization of Cr in Cr2O7 2- ion is. Option A is sp3d, option B is sp3d2, option C is sp3, option D is sp2. The correct answer is C, that is sp3. Bakelite is a product of reaction between. Option A is formaldehyde and NaOH. Option B is aniline and urea. Option C is phenol and methanol. Option D is phenol and formaldehyde. The correct answer is D, that is phenol and formaldehyde. Name the gas that readily decolorize acidified KMnO4 solution. Option A is SO2, B is NO2, C is P2O5, and D is CO2. The correct answer is A, that is SO2. Which of the following is not an example of addition polymer? Option A is polystyrene, B is polyethylene, C is polypropylene, and D is terylene. The correct answer is D, that is terylene. Sodium has body-centered packing. The distance between two nearest atoms is 3.7 angstrom. The lattice parameter is. यहाँ पे लैटिस पैरामीटर मीन्स ये तुम लोग से पूछा गया है क्या होगा और कैसा है, BCC लैटिस, BCC पैकिंग की गई है किसके, सोडियम एटम की. ऑप्शन क्या है, 4.3 एंगस्ट्रॉम, 3.0 एंगस्ट्रॉम, 8.6 एंगस्ट्रॉम एंड 6.8 एंगस्ट्रॉम. देखो सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a. तो यहाँ पे निकाला कि हमको a निकाला, d दिया गया 3.7 एंगस्ट्रॉम. a इक्वल्स कितना हो जाएगा, 3.7 × 2 अपॉन √3. √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732. यहाँ पे रखेंगे, आंसर कितना आएगा, 4.3 एंगस्ट्रॉम. तो करेक्ट आंसर इज ए. The cation and anion are arranged in alternate form in. Option A is metallic crystal, B is ionic crystal, C is covalent crystal, and D is semiconductor crystal. The correct answer is B, that is ionic crystal. CF2CF2 is a polymer of. Option A is Glyptal, B is Teflon, C is Orlon, and D is Buna S. The correct answer is B, that is Teflon. Isomer of a substance must have same. Option A is structural formula, B is physical formula, C is chemical formula, and D is molecular formula. Isomer of substance must have same molecular formula. So correct answer is D. Vulcanization make rubber. Option A is more elastic, B is soluble in inorganic solvent, C is crystalline, and D is none of these. The correct answer is A, that is more elastic. Thermosetting polymer bakelite is formed by the reaction of phenol base. Option A is CH3CHO, B is HCHO, C is HCOOH, and D is CH3CH2COHO. The correct answer is B, that is HCHO. Which of the following is the strongest base? First option is SCOH का whole thrice, B is LaOH whole thrice, C is LuOH whole thrice, and D is YbOH whole thrice. इसमें से पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा. अगर हम बात करें लैंथेनम से अगर हम लोग ल्यूटेटियम की तरफ जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है. तो उस बेसिस से हाइड्रोक्साइड का ऑर्डर है तो डिक्रीज करेगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी. टेरिलीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड. ऑप्शन ए इज थैलिक एसिड, बी इज टेरेप्थेलिक एसिड,
C is adipic acid, and D is 1,6 hexadiamine. The correct answer is B, that is terephthalic acid. Which metal has the lowest melting point? Option A is cesium, B is mercury, and C is manganese, D is copper. The correct answer is B, that is mercury. Buna S is option A is addition polymer, B is condensation polymer, C is both A and B, and D is none of these. The correct answer is A, because Buna S is addition polymer. Natural rubber is first option A is neoprene, B is trans polyisoprene, C is cis polyisoprene, and D is butyl rubber. Natural rubber is a cis polyisoprene. The correct answer is C. The stable oxidation state of cerium, that is Z equals to 58, is options are 4, 3, 2 and 5. The correct answer is A. Ziegler-Natta catalyst is used in the preparation of option A is HDP, that is high density polythene, option B is LDP, that is low density polythene, option C is Dacron, and option D is Teflon. The correct answer is A, that is high density polythene. Which of the following is called a polyamide? Option A is rayon, B is nylon, C is terylene, and D is bakelite. Which of the following is polyamide? And the polyamide is nylon. The correct answer is B. Which of the following is not a step growth polymer? Option A is polybutadiene, option B is nylon 6,6, option C is glyptal, option D is terylene. The correct answer is A, that is polybutadiene. Which of the following pair has the same size? Option A is Zn4 plus HF4 plus, option B is Zn2 plus HF4 plus, option C is Fe2 plus Ni2 plus, option D is Zn4 plus Ti4 plus. Zn4 plus and HF4 plus I have similar size because of lanthanoid contraction. So correct answer is A. The contribution of a particle at the H center of a particular unit cell is option A is 1 by 2, B is 1 by 4, C is 1 and D is 1 by 8. The correct answer is B, that is 1 by 4. Which of the following is used as anti-knocking agent? Option A is Glyxol, B is Freon, C is TEL and D is ethyl alcohol. The correct answer is C, that is TEL. TEL is tetraethyl lead, that is C2H5 4Pb. Bakelite is option A is addition polymer, B is condensation polymer, C is elastomer and D is thermosetting polymer. Bakelite is a thermosetting polymer. The correct answer is D. Benzene react with acetyl chloride in the presence of AlCl3 to give. अगर बेंजीन की रिएक्शन हम लोग एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड क्या होगा? CH3COCl. किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 प्रेजेंस में. तो क्या फॉर्म होगा? पहला ऑप्शन एसिटोफिनॉन, दूसरा है टाउलिन, तीसरा है बेंजोफिनॉन और चौथा इथाइल बेंजीन. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एसिटोफिनॉन. रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, बेंजीन होगा, कंबाइन करेंगे हमको एसिटिल क्लोराइड के साथ मींस CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3. तो क्या फॉर्म होगा? एसिटोफिनॉन. Highest oxidation state shown by manganese in its compound is option A is 7, B is 6, C is 5 and D is 8. The correct answer is A, that is +7. Cellulose is option A is natural polymer, B is semi-synthetic polymer, C is synthetic polymer and D is none of these. Cellulose is a natural polymer. The correct answer is A. Formation of which of the following polymer involve hydrolysis reaction? Option A is nylon 6, B is bakelite, C is nylon 6,6, D is terylene. The correct answer is A, that is nylon 6. Chromyl chloride is option A is Cr2Cl2, option B is CrOCl2, option C is CrCl3, option D is Cr2OCl2. The correct answer is A, that is Cr2O2Cl2. द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड. इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताना है. सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ थर्ड कार्बन चेन पे भी CH, यहाँ थर्ड कार्बन चेन पे भी कार्बन लगा हुआ है. तो नंबरिंग स्टार्ट इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग हमको ज़्यादा मिल रही है. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. 8 कार्बन चेन है तो ऑक्ट यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे. थर्ड कार्बन क्या लगा है? आइसो ग्रुप लगा हुआ. ठीक है, ये आइसो का कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल ग्रुप है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 आइसोप्रोपाइल हो जाएगा. यहाँ पे 6 पे क्या लगा हुआ? ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन क्या है? इथेन की. ठीक है, इसलिए साइड चेन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? इथाइल लिखेंगे. तो क्या हो जाएगा? 3 आइसोप्रोपाइल 6 इथाइल ऑक्टेन. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. If the lattice parameter for a crystalline structure is 3.6 angstrom, यहाँ पे lattice parameter दिया गया है 3.6 angstrom, then the atomic radius in FCC crystal. तो पूछा गया FCC के लिए atomic radius का क्रिस्टल क्या होगा. ठीक है, FCC क्रिस्टल है, वहाँ पे atomic radius पूछा गया है.
पहला ऑप्शन 2.92 एंगस्ट्रॉम, दूसरा 1.27 एंगस्ट्रॉम, तीसरा 1.81 एंगस्ट्रॉम और चौथा है 2.10 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला बनता है। रेडियस क्या होता है एफसीसी के लिए, A/2√2। ए दिया हुआ 3.6 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे रखेंगे 3.6 एंगस्ट्रॉम, 2 हो गया, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, यहाँ पे इसको रखेंगे, कितना आंसर आएगा 1.27 एंगस्ट्रॉम। सो करेक्ट आंसर इज बी। A strong base can abstract an alpha hydrogen from. Option A is alkene, B is amine, C is ketone, D is alkane. The correct answer is C, that is ketone. Potassium dichromate belong to which crystal system? Option A is tetragonal, B is orthorhombic, C is triclinic, and D is hexagonal. The correct answer is C, that is triclinic. Monomer of BuNa-S is, option A is vinyl chloride, B is butadiene, C is styrene and butadiene, and D is isoprene and butadiene. The correct answer is C, that is styrene and butadiene. In each carbon atom undergoes, option A is sp, B is sp2, C is sp3, and D is sp2 and sp3 hybridization. In benzene alternate double bond exists, so correct answer is B. Ethylene react with Bayer's reagent to give. Option A is glycol, second is acetophenone, third is oxalic acid, fourth is ethyl alcohol. The correct answer is A, that is glycol. When ethene react in the presence of alcoholic KMnO4, it will form glycol. A hydride of group 15 having largest bond angle is, first option A is NH3, B is PH3, C is ASH3, and D is BiH3. The largest bond angle are present in NH3. The geometry of XeOF2 is, first option is pyramidal, second is T-shape, third is octahedral, and fourth is tetrahedral. This is the shape of XeOF2. It is T-shaped. Correct answer is B. Roasting result in the production of metal in case of, first option is iron pyrite, second is galena, third is cinnabar, and fourth is bauxite. The correct answer is C. Among the trihalide of nitrogen, which one is the least basic? Option A is NF3, option B is NCl3, option C is NBr3, and option D is Ni3. The correct answer is NF3. Zone refining has been employed for preparing ultra pure sample for, first option is copper, second is sodium, third is germanium, and fourth is zinc. The correct answer is C, that is germanium. During roasting of zinc blend, it convert to, first option is ZnO, second is ZnSO4, third is ZnCO3, and fourth is Zn. The correct answer is ZnO, that is zinc oxide. Pure nitrogen gas is obtained from, first option is NH3 plus NaNO2, second is NH4Cl plus NaNO2, and third option is N2O plus Cu, and fourth option is NH4 whole twice Cr2O7. The correct answer is B. क्लोरोबेंजीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय, क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन करना है किससे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो कौन सी रिएक्शंस होगा, पहला ऑप्शन है गटरमैन रिएक्शन, दूसरा फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शन, तीसरा वुड्स रिएक्शन और चौथा है फिटिंग रिएक्शन। तो कौन सा होगा, गटरमैन रिएक्शन होगा। अब देखो कैसे होगा गटरमैन रिएक्शन, हमने यहाँ पे क्या लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको जब रिएक्ट कराएंगे Cu, HCl के प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म होगा, क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा प्लस N2 बाहर हो जाएगा। तो कौन सी रिएक्शन हुआ, गटरमैन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Rocky impurity present in mineral ore called, first option is flux, second is gangue, third is slug, and fourth is ore. The correct answer is B. If the length and area of cross section of conductor are doubled, then its resistance will be, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या किया गया, यहाँ पे लेंथ को डबल कर दिया गया और एरिया को डबल कर दिया गया है, ठीक है। तो बताना है जो रेजिस्टेंस होगा उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस अनचेंज होगा, हाफ होगा, डबल होगा या फिर क्वाड्रपल्ड होगा। चलो सॉल्व करते क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, रो आर इक्वल्स टू रेजिस्टेंस का पूछा गया, आर इक्वल्स क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। लेंथ क्या होगी, डबल हो गई तो लिखेंगे आर रो 2L अपॉन 2A हो जाएगा, एरिया भी डबल हो गया तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला आ जाएगा रूट L अपॉन ए। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वही रेजिस्टेंस वही रहेगा, उसमें कोई इससे इफेक्ट नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। द मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ impure metal which is based upon the phenomena of electrolysis of cell, first option is electrolytic refining, second is hygrometallurgy, third is pooling, and fourth is liquefaction. The correct answer is A, that is electrolytic refining. The chlorination of methane is an example of, option A is elimination, B is substitution, C is addition, and D is oxidation. The correct answer is chlorination of methane. Chlorination means addition of chlorine to the methane. The correct answer is B, that is substitution. XeF4 molecule has the shape,
Option A is tetrahedral, B is square planar, C is square pyramidal, and D is trigonal bipyramidal. The XeF4 has a molecular shape of square planar. Brown gas formed when HNO3 is reduced by metal is option A is N2O, B is N2O3, C is NO2, and D is NO. The correct answer is C, that is NO2. Which of the following oxide is strongly acidic? Option A is P4O10, B is SO3, C is Cl2O7, and D is Al2O3. The correct answer is C, that is Cl2O7. In the reaction CH3CHCl2 react in the presence of aqueous KOH, it will form X. इस रिएक्शन में CH3CHCl2 है, अगर aqueous KOH साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? रिएक्शन देखते हैं कैसे होगा. CH3 है, CH है, Cl2 है. इसको जब रिएक्ट कराएंगे aqueous KOH के साथ तो यहाँ पे क्या करेगा, Cl रिमूव हो जाएगा और OH लग जाएगा. तो क्या बनेगा यहाँ पे इंटरमीडिएट CH3CH OH यहाँ पे लग जाएगा क्लोरीन हटा के, और एक OH यहाँ पे लग जाएगा. ठीक है, ये होता है हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट. यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा. ठीक है, जब यहाँ से वाटर रिमूव होगा जो बचेगा क्या यहाँ पे CH3CHO, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप बचेगा. तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड. ऑप्शन ए इज एनोड, बी इज कैथोड, सी इज एनोड और कैथोड, डी इज इलेक्ट्रोलाइट. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एनोड. Which of the following is not an ore of magnesium? First option is gypsum, second is dolomite, third is magnesite, fourth is carlinite. The correct answer is A, that is gypsum. The alkyne which react with KMnO4 to give pyruvic acid is option A is ethine, B is propene, C is propyne, and D is ethine. The correct answer is C, that is propyne. Which of the following is colored gas? First option is NO2, second is N2O5, third is N2O4, and fourth is N2O. The correct answer is A, because NO2 is of brown color. Gas can be dried over. First option is CaCl2, second is concentrated H2SO4, third is PCl3, and fourth is quicklime. Ammonia gas can be dried over quicklime. The correct answer is D. Which of the following is not a chiral? इसमें से पूछा गया कौन सा ए चिरल मॉलिक्यूल है. पहला ऑप्शन है 2-मिथाइल हेक्सेन, दूसरा है 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तीसरा है 2,3 ड्राई ब्रोमोपोटेन, एंड चौथा है ब्यूटेन 2 ऑल. यहाँ पे देखो पूछा गया है ए चिरल मॉलिक्यूल कौन सा होगा. ए चिरल मतलब क्या होगा, कौन सा सिमेट्रिकल होगा. सिमेट्रिकल की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग सी देखें क्या लिखा है 2,3 डाई ब्रोमोब्यूटेन. तो इसको हम बनाएंगे क्या होगा, 4 कार्बन चेन 1 2 3 4. तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड में क्या लगा, ब्रोमीन. यहाँ पे भी ब्रोमीन होगा और यहाँ पे भी ब्रोमीन होगा. हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे. ये क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल है, मीन्स कैसा है, ए चिरल. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी. डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विद सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव. First option is CO, second is C, third is CO and CO2, and D is C2H4 and O4. The correct answer is CO, because HCOOH react with H2SO4, it will release carbon monoxide plus water. The purpose of smelting an ore is, first option is oxidizes, B is reduce it, C is obtain an alloy, D is separate volatile impurity. The correct answer is B, that is reduce it. The reaction of toluene with Cl2 in the presence of FeCl3 give predominantly. इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, टॉल्यून को रिएक्ट कराया जा रहा है Cl2 के साथ, तो क्या फॉर्म होगा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3. कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी. टॉल्यून क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, इसको Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो क्या फॉर्म होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा. मीन्स क्या फॉर्म होगा, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्यून का फॉर्मेशन होगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी. Number of acidic hydrogen in one butane is, option is 1 2 3 and 4. The correct answer is A, that is 1. Which of the following oxide is strongly acidic? Option A is P4O10, B is SO3, C is Cl2O7, and D is Al2O3. The correct answer is C, that is Cl2O7. The number of pi bond in naphthalene is 5 6 3 and 4. The correct answer is 5. In naphthalene there are total 5 pi bond.